हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास जो है वो नाउन्स के बारे में है। लेकिन लेकिन ये क्लास शुरू होने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। आज हम नाउन्स एंड नाउन्स के टाइप्स, द टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। सी, नाउन किसको कहते हैं? नाउन कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग को हम लोग नाउन डिनोट करते हैं। अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कोई भी नाउन जो होता है ना, वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, कभी कभी फीलिंग्स भी हो सकता है। ठीक। सो वर्ड, ये जो वर्ड है थिंग, ये यूनिकली एक्सपेंसिव है ग्रामर में। मीन्स ये एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारी चीजों को लेकर हम लोग थिंग बोलते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन का डिफरेंसेस क्या है? Proper noun. So the definition of a particular person or place derived from the Latin word one, one's own. Like हो सकता है कि ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा, ये हम बोल सकते हैं अनकॉमन है। अनकॉमन क्यों? कॉमन का जो ऑपोजिट होता है उसको हम लोग अनकॉमन बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक ही, सपोज अगर मैं बोलूं अशोका, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। सो अशोका, मैं एक पर्टिकुलर किंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो अशोका जो है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और किंग, किंग तो कोई भी होता है। अगर सपोज मैं अगर किंग बोलूं, तो आप क्या, आपको पता चल रहा है कि मैं किस किंग के बारे में बात कर रही हूँ? कोई भी किंग हो सकता है। यहाँ पे किंग जो है वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब क्या है? अ नेम गिवन इन कॉमन to every person or thing of a same class or kind. So common here means shared by all. तो कॉमन का यहाँ पे मतलब होता है कि ये हर कोई शेयर करता है। जैसे सीता, सीता इज अ गर्ल। सो यहाँ पे सीता एक लड़की का नाम है। हरी, हरी इज अ बॉय। सो यहाँ पे हरी किसी का नाम है। तो हरी और सीता दोनों प्रॉपर नाउन होंगे, और गर्ल एंड बॉय ये दोनों कॉमन नाउन होंगे। कोलकाता इज अ बिग सिटी। सो कोलकाता एक सिटी का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। एंड सिटी क्या है? सिटी कोई भी सिटी हो सकता है। इट कैन बी मुंबई, इट कैन बी दिल्ली, इट कैन बी एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो ये हम लोग हर सिटीज को सिटी ही बुलाते हैं, राइट? सो ये हो गया कॉमन नाउन। इंडिया, सेम विथ इंडिया। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। सो यहाँ पे अगर इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री का नेम है। और भी बहुत सारे इंडिया है, लेकिन वो कंट्री नहीं है, या फिर वो अ, मतलब बहुत सारे देशों में, लेकिन सबसे फेमस अगर कोई है यहाँ पे तो इंडिया ही है। ठीक है, सो इंडिया ही है। सो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। सो यहाँ पे इंडिया जो है वो है प्रॉपर नाउन, हमारा प्यारा देश। एंड कंट्री, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकता है यहाँ पे। सो कंट्री जो है वो है कॉमन नाउन। आई होप
प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको क्लियर हो गया है। ओके, ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज। सो कभी कभी हम लोग प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन भी ट्रीट करते हैं। ओके, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन भी यूज करते हैं। ओके, जैसे लुकमैन, लुकमैन एक नाम है, एक नाम है, इंसान का एक नाम है जो बहुत फेमस था। ओके, सो इसके ना, अगर मैं बोलूं कि सॉरी, यू आर द तेंदुलकर ऑफ आवर एरिया। इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है एज अ तेंदुलकर की तरह। तेंदुलकर, तेंदुलकर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है इस अरेना में। ओके, सेम अगर मैं यहाँ पे अगर ये बात बोलूं कि तेंदुलकर की तरह तुम काम करते हो, तेंदुलकर की तरह तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ पे एज अ, ये क्या हो गया, तेंदुलकर इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, बट स्टिल वी आर ट्रीटिंग एज अ कॉमन नाउन। हम लोग उसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। ओके, सी दिस वन, ही वॉज द लुकमैन ऑफ हिज एज। सो लुकमैन, लुकमैन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लुकमैन का मतलब हो रहा है कि वो अपने एज का लुकमैन था। ओके, बिकॉज कॉमन नाउन मीन द वाइजेस्ट पर्सन। सो यहाँ पे लुकमैन जो था एक पर्सन था जो बहुत ज्यादा वाइज था। इसीलिए अगर कोई भी बहुत ज्यादा वाइजेस्ट निकलता है ना, तो हम लोग बोलते हैं उसको दैट आप उस एज के लुकमैन हो। ठीक है, Kalidas is, sorry, that's Kalidas. Kalidas is often called the Shakespeare of India. क्यों? क्योंकि कालिदास एक बहुत 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 अच्छा एक ऑथर था, एक प्ले राइट था। सो तो सेम एज शेक्सपियर। सो हम लोग कालिदास को क्या बुलाते हैं, हम लोग शेक्सपियर बुलाते हैं इंडिया को। तो शेक्सपियर इज प्रॉपर, बट हियर वी आर यूजिंग एज कॉमन नाउन। I hope guys this is clear. So now let's move on to the next slide. Yeah. So see, noun, we know it is proper noun and common noun. Now, common noun, common noun is divided into two nouns. One is collective nouns and one is abstract noun. So what is a collective noun? Collective noun is group. Okay. So here, group of things, animals, any noun, okay, animal, things is known as collective. Abstract noun is generally their feelings, cannot be seen. Okay, they are intangible. Okay, so let's see. Okay, so the name of a number or collection of a person or things taken together and spoken as one whole is known as group, or you can say collective noun here. Okay, for example, if I say a collection of ships is known as fleet. So that's why we say a fleet of ships. That means a collection of ships. A collection of soldiers is known as army, an army of soldier. A collection of people is known as crowd. Okay, so like sometimes, sometimes we generally use collective nouns as singular nouns. Okay, so you should always think, use your intellect that
कि हम लोग यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं ना, ओके, वो क्या एज अ होल हम लोग वो बात कर रहे हैं, एज अ होल हम लोग बात कर रहे हैं, या इंडिविजुअल में बात कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जूरी, जब जूरी हम लोग, जूरी का एक ही डिसीजन होता है, वन डिसीजन, तो हम लोग जूरी को एज अ सिंगुलर यूज ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर जूरी में ही अलग अलग डिवाइडेड ओपिनियंस हो, तो हम लोग जूरी को एज अ प्लूरल यूज करते हैं। So we will come to that part when we discuss about subject verb agreement. But today let's focus on nouns. Okay, a herd of cattle is passing. The French army was defeated. Okay, so the police dispersed the prize. Okay, one more thing, guys. जब हम लोग पुलिस के बारे में बोलते हैं ना, सो द पुलिस जो है ना, ये भी एक कलेक्टिव ही है, मीन्स ये भी एक प्लूरल ही है। वाई प्लूरल? सपोज एक सिंगल पुलिसमैन है, पुलिस है, तो वहां पे हम लोग उसको बोलेंगे पुलिसमैन। ओके, लेकिन अगर एक ही, मतलब बहुत सारे पुलिस है, सो वहां पे हम लोग उसको बोलेंगे पुलिस। सो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, पुलिस जो है वो प्लूरल होता है, नॉट सिंगुलर। ओके, abstract nouns. So I told you, isolating the intangibles means, I told you they are intangible. Why intangible? हम लोग इसको छू नहीं सकते, we cannot see them, we cannot touch them. ओके, सो हम लोग ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं, हम लोग बस क्या कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, वी कैन फील। ओके, सो द नेम ऑफ क्वालिटी, action, state considered apart from the object to which it belongs. For example, the word abstract is literally means drawn off. Okay? For example, यहाँ पे देखते हैं bravery. ब्रेवरी जो है वो एक क्वालिटी है किसी इंसान का, राइट? ओके, ही इज अ ब्रेव मैन, सो योर ब्रेवरी इज अ क्वालिटी। ओके, लाइक गुडनेस, काइंडनेस, honesty, wisdom, brightness, hardness, whiteness, darkness. These are all qualities. Action, laughter, theft, movement, judgment, hatred. These are all action. State, childhood, boyhood, slavery, sleep, sickness, death, poverty. These are all statehood. Okay. So abstract noun can name a quality, action, or state. So sometimes don't get it confused. Okay, we make abstract noun using much, like many kinds of part of speech. Like sometimes we use adjectives, sometimes we use verbs, sometimes we use common nouns also. For example, kind. He is a kind boy. For example, kind. Suppose this is the word kind. So we say he's a kind boy. Kind here is an adjective. Okay. So अगर इसको हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट डाउन करना है, सो हम लोग यहाँ पे NESS लगा देंगे, सो इट बिकम्स काइंडनेस। ऑनेस्ट becomes honesty. Okay, most abstract nouns are formed in this way only. Okay, let's see verbs को हम लोग कैसे abstract noun में बनाते हैं। obey, for example, obey, it becomes obedience. Grow becomes growth. Child possess childhood. Slave possess slavery. So these are all common nouns. Okay, so the names of arts and sciences, example grammar, music, chemistry, operate independently but are also classified as abstract nouns.
Okay, so let's see countable nouns. Okay, so name of objects, people that we can count. For example, book, pen, apple. These are all what countable nouns. We can count. What are uncountable? The names that we cannot, name of things which we cannot count. For example, sugar, oil, milk, gold. These are all uncountable. We cannot count them. Though we can measure them using other equipments and measurement tools, but we cannot count them with our hand or with our mind. Okay, possess plural forms. We can use a and in means before countable nouns. Remember this. Okay, I can say a cup. Okay, but I cannot say a water. Why? Because this is uncountable and this is countable. So here, what is happening? Here we can count cup. So that's the reason we can also make it cups. But we can never make waters, milks, because uncountable noun cannot be, cannot be used as plural forms. Okay, it do not possess plural forms. We cannot say milks. So let's see, this is the flow chart. Nouns, it is divided into proper and common. Proper noun is proper, okay? We cannot do any changes in that. But common nouns can be divided into countable and uncountable. Countable noun can be standard common, like the way it is, collective noun, okay? And uncountable noun can be abstract and can be some substances also, like gold, okay? Silver. Understood? Okay. So let's see few examples. A crowd, the crowd was very big. Okay, so here crowd is collective. Crowd, what is the meaning of crowd? Group of people, right? So crowd was very big. That is group of people. Always speak the truth. So truth is abstract noun. It is a quality, right? Okay, you can also use it as like, what do we call it? Some people are honest. The honest is a quality. Our class consists of 20 pupils. So here pupil is students. So class is collective now, class of students. Okay, we can, there's one fun fact, school, right? Collection means a collective noun of or a group of fish is known as school. Okay, we can call it a school of fish. Okay, without health, there is no happiness. Happiness is abstract noun. Health is abstract noun. Okay, so now let's summarize the whole session. Proper noun, collective noun, abstract noun, and countability means whether it is uncountable or countable. Okay, so proper noun, it is specific. Okay, we know whom are we talking about. For example, Ashoka, remember, or Sita is a girl. Okay, so Sita is a proper noun. It is a name of a person. Collective noun, multiple, units spoken. For example, fleet, army, school. Okay, pride of lions. So these are all collective noun. Abstract noun, it is intangible qualities, actions, and states. Okay, remember truth in the previous session, yes, this one, truth. Truth is an action. Okay,
And honest, a person who speaks truth, they're honest, and that is a quality. Okay, countable nouns. Countable noun can have plurals. Remember, we can use a and before countable nouns, and we can also add plural. That means s to the countable nouns. But substances and concepts like milk and honesty, it cannot be counted, right? So they are uncountable nouns. So here comes the end of the session. I hope you liked it. And if you liked it, please don't forget to like, subscribe, and comment on the comment box. If you have any queries, अगर आपके पास कोई भी queries है, कोई भी अगर आप चाहते हो कि हम लोग उस वीडियो पे लेके आए वीडियो, so please आप एक बार वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई क्वेरीज हो इस टॉपिक पे लेकर, उसको भी आप क्वेश्चंस में कमेंट में डाल सकते हैं एज अ क्वेश्चन. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर.